Have a lovely morning, children. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tong. Children, in today's video, we are going to start one more interesting chapter of science, which is chapter number 4, Materials, Metals and Non-Metals. And the topic which we are going to cover in today's video is the physical properties of metals. Let's recall what the materials are. In your junior classes, we have studied about the materials. Materials are the substances which are used to make variety of objects. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं, they all are called as the materials. Now all these materials, elements, they have similarities and some of the differences between them. And on the basis of these similarities and differences, these materials, elements are basically classified into two major groups. And these two major groups are metals and non-metals. Like if we are talking about the gold and silver, iron, right, what these all are? These all are the metals. And if we talk about the different gases, the oxygen which we are using for the respiration process, carbon dioxide gas used by the plants for photosynthesis, nitrogen used as a nutrient for the plants, nitrogen supply, right. So what these gases are? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide. These are the examples of the non-metals. There is a third category also of the elements which is called as metalloids. What the metalloids are? Metalloids are those elements which show some of the properties of metals and some of the properties of non-metals. That means they are the intermediate in the properties of metals and non-metals. मेटलॉइड जो होते हैं सब्सटेंसेस एलिमेंट्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स भी कहते हैं बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Some of the examples of metalloids are silicon, germanium. These are the examples of the metalloids. In today's video, we are going to start studying in detail about the metals, and let's talk about the physical properties of metals. A lot of objects in our surroundings like our cooking utensils, almirahs, cars, buses, railway tracks, what these substances are made up of? These all objects are made up of the metals. And these metals have some certain properties, some of the physical properties and chemical properties. तो बात करते हैं कि what the physical properties these metals have. इन metals की physical properties कौन कौन सी होती हैं? Those properties which can be detected outside, from outside, जिसको हम बाहर से check कर सकते हैं. Those properties are called as the physical properties. So the first physical properties of the metal is physical state. There are generally three physical states of matter named as solids, liquids and gases. But these metals, they are generally solid in physical state. Physical state इनकी क्या होगी? They are solid. Like iron, copper, aluminium, they all are found in the solid state. But always there are certain exceptions, right? So the best exception of this physical state of metals is that all the metals, they exist generally in the solid state, but mercury is a metal which exists in its liquid state. ये एक metal होते हुए भी liquid state में generally normal room temperature पे exist करता है, which is used in the thermometers also. In the bulb or thermometer, mercury is filled, which expands on heating and gives us the accurate temperature of the body, right? बात करते हैं second physical property of the metal, that is metallic luster. Luster word determines the shine. तो जितने भी मेटल्स होंगे उनकी अपने खुद की इंडिविजुअल मेटेलिक लस्टर प्रेजेंट रहता है. Like if we talk about the gold, it has yellow luster. If we talk about silver, it has silvery shine. If we talk about copper, that has a reddish brown shine, right? Aluminium, that has the white shine. So different metals, they have different color of shine, but सबके अंदर shine present रहती है. But how do we check the luster of any metal? हम कैसे check करते हैं किसी metal का luster? Because you know very well, when iron objects are used for a long time, for a prolonged time, what happens when they are exposed to the atmosphere, when they come in the contact of air and moisture? So iron के ऊपर on coming in the contact of
moisture and air, a rust layer is formed. जंग लग जाता है आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग प्रोसेस हैज बीन टेकन प्लेस, राइट. तो उसके ऊपर अगर मुझे चेक करना है कि अज्यूम दिस इज आयरन रोड और इसके ऊपर रस्टिंग प्रेजेंट है, रस्ट की लेयर प्रेजेंट है, एंड आई वांट टू शो दैट दिस इज अ मेटल व्हिच हैज इट्स नेचुरल लस्टर, इसमें लस्टर प्रेजेंट रहता है. सो हाउ दैट कैन बी प्रूव्ड, उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? That can be checked either by sandpaper the surface of metal. इस मेटल के सरफेस को अगर मैं सैंडपेपर से रब कर दूं, then all the rust which is present on its surface will be removed off, वो remove हो जाएगा, and then this metal will start showing its natural luster, वो अपनी शाइन शो करना स्टार्ट कर देगा. The second way can be used is we can freshly cut the metal to check whether it has a luster or not. Assume again it is a gold rod and मुझे चेक करना है कि whether it has luster or not. तो again gold ornaments, when we purchase them from the market, right, they have the natural shine, but after using them for a long time their luster becomes dull. उनकी जो luster है, shine होती है, वो धीरे धीरे fade होना स्टार्ट हो जाती है, dull होना स्टार्ट हो जाती है, because of the attack of atmospheric gases over those metals. metals के ऊपर एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, वो सब अटैक करते हैं और उनकी शाइन धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. तो अगर मुझे शो करना हो कि फिर से ये गोल्ड रोड है एंड इट हैज इट्स येलो शाइन, देन आई कैन फ्रेशली कट इट. मैं इसको सेंटर से बिल्कुल कट कर दूं, तो जो इसकी कटेड सरफेस होगी, दैट कटेड सरफेस एज इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, सो दिस सरफेस इज गोइंग टू शो इट्स नेचुरल शाइन. So all the metals, they have their metallic luster, color of shine that is differ in the different metals. The third physical property is that metals are generally hard. They are very hard. बहुत hard होते हैं वो nature के अंदर. And again यहाँ पे भी हम कॉमन एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं. आयरन इज सो हार्ड, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू बिल्ड ब्रिजेस के फॉर्म के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर, और इन रेलवे ट्रैक्स वी यूज आयरन को बेसिकली यूज करते हैं. दैट एरोप्लेन की जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम, राइट. तो डिफरेंट मेटल्स आर हार्ड, बट अगेन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. These are the two metals which are so soft that they can be easily cut by using a knife. एक आयरन की रोड को अगर हम नाइफ से कट करने की कोशिश करें, then that is next to impossible. वो पॉसिबल नहीं है नाइफ से कट करना. But sodium and potassium, these are also metals, but so soft कि उनको हम नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं. The next property is that they are malleable. उनकी जो प्रॉपर्टी है वो malleability present रहती है इनके अंदर. What this malleability is? Have you ever seen the aluminum foil papers used in your lunch boxes to wrap your food stuff? Right? आपने उनको देखा हुआ है. Whenever the goldsmiths, they prepare different ornaments. For preparing them, what they do? They change the shape. Generally, they have the gold and silver in the rod form. Rod की फॉर्म में उनके पास गोल्ड और सिल्वर प्रेजेंट रहता है. तो ऑर्नामेंट बनाने के लिए वो क्या करते हैं गोल्डस्मिथ, वो उसको बीच करते हैं विद अ हैमर एंड दे कन्वर्ट देम इनटू थिन शीट्स एंड देन दोस शीट्स आर मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन. उसको डिफरेंट शेप्स के अंदर मोल्ड करते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल पेपर दैट इज सो थिन, बहुत थिन होता है वो. You must have observed some of the sweets in the markets also which have the silver coating on its surface, जिसके ऊपर सिल्वर की पतली सी लेयर प्रेजेंट रहती है, right? So what that property is, that metals can be beaten into thin sheets. metal को force apply करके हम बिल्कुल thin sheets में convert कर सकते हैं. And this property of metals is called as malleability. And the metals that show this property are called as malleable metals. The next property is, children, ductile. Metals are generally ductile. They have the ductility. What the ductility is? In the electricity, जो पावर सप्लाई होती है, for that we have a lot of wires. Wires के थ्रू पावर सप्लाई हमारे घरों तक पहुंचती है, right? And those wires are generally made up of the copper. Copper से या एल्यूमिनियम से बने हुए ये wires हम यूज करते हैं, right? So metals, they can be drawn into long wires. metals को फोर्स अप्लाई करके हम लंबे लंबे वायर्स में खींच सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं.
and this property of metals is called as ductility, and the metals which show this property are called as ductile metals, right? And best example हमने discuss कर लिया अभी. Now these all properties, they are not same in strength in all of the metals. हर metal में malleability अलग होगी, ductility की property अलग present रहेगी. So the best ductile metals जो बहुत ज़्यादा ductile हो सकते हैं, जिनको हम long wires में convert कर सकते हैं, they are the silver and copper. Silver and copper highly they can be converted into long wires. Then why these electrical wires, they are made up of the copper, not of the silver and gold? उनको silver और gold से क्यों नहीं बनाते? Because that would be expensive. Silver and gold are expensive in the comparison of the copper. तो इसलिए हम जो electrical wires हैं, they are made up of the copper. The next property is conduction of heat. Metals are good conductors of heat as well as conduction of electricity. वो heat और electricity का बहुत अच्छे से conduction करते हैं, and that is the reason our cooking utensils, they are made up of the metals. जो भी हम कुकर वगैरह यूज करते हैं घर पे, समटाइम्स कुकर है, फ्रैंक पैन है, दे आर जनरली मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम और स्टील विच इज एन एलॉय. इन सब चीजों से मिलके बने हुए हैं. And to check whether the metal is good conductor of heat or not, what we can simply do, we can simply put some water in the aluminium container. Aluminium का जो pot है, उसमें से water डाल के उसको हम warm up अगर करें, तो within some time that water will start boiling. Why does that happen? ऐसा क्यों हुआ? Because the heat reaches to the aluminium container, and from that aluminium container, that heat reaches to the water inside, making it warm up. That means aluminium के container में से heat का क्या हो रहा है? Conduction हो रहा है. One simple activity can also be conducted to explain the conduction of heat. What we can do? We can have a stand. हमने एक stand use कर लिया, and with this stand I have attached a knitting needle. मान लो मैंने यहाँ पे एक knitting needle जो सिलाई होती है या एक आयरन की रोड को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है. Here I am having a candle से flame ignite कर दिया उसको, and over this knitting needle और iron rod I have placed some pins. मैंने यहाँ पे आयरन के कुछ pins जो होती हैं, nails जो है, कील जो होती है, उनको अटैच कर दिया है by attaching some wax on their broad portion. जिसका broad portion होगा वहाँ पे थोड़ा सा मैंने wax अटैच कर दिया, और wax की हेल्प से, molten wax की हेल्प से इसको इस रोड के ऊपर अटैच कर दिया. Now start giving heat to this one end of this rod. यहाँ से हम इसको heat provide करवा रहे हैं, and within few seconds what we will observe, we will see that these iron pills will start falling one by one. The nail which is closer to this end will fall first, and the nail which is farthest from this flame will fall away at the last. वो सबसे last में गिर रही है. That means we can say that heat is being given to this end of the rod, but that heat is being transmitted, that heat is being conducted through this rod till the last part of the aluminium any metal rod, right? So it shows how the metals are good conductor of heat. In the same way, conduction of electricity, metals are good conductors of electricity also, and that is the reason copper is the best conductor. Copper and silver, they are the best conductors of electricity. इसलिए जितने भी electrical supplies होती हैं, power supplies, उसमें generally जो wires use करते हैं, electrical wires, they are made up of the copper. बात करते हैं next property, that is metals are sonorous. Sonorous means metals, when they are struck with some surface, with a hard surface, they produce ringing sound. उनसे ringing sound produce होती है. Can you hear the sound of this bottle? I am having a bottle in my hand and I am striking it with this marker. So it produces a ringing sound. Can you hear one more sound? I am having a coin in my hand. When I fall it down, you can hear the ringing sound. It proves that metals, whenever they hit to any hard surface, they produce a ringing sound. And the best example is your school bell. Here we are not talking about the electrical bells, we are talking about the ordinary bells, जो round color के metal की एक plate लगी हुई रहती है, hang with some surface, और जिसके ऊपर hammer से strike करते हैं, and you hear the sound, आपको sound सुनाई देती है, which gives you the information about your lunch break or period over or school getting over, right? So metals are sonorous in nature. The next property is density. What is the density actually?
So density का एक सिंपल सा फॉर्मूला है which says that density is equal to mass upon volume. And you might be familiar with these terminologies, mass and volume. Volume means space occupied, कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, एंड मास इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है इन अ फिक्स्ड एरिया. से आई एम हैविंग टू प्लेट्स इन माय हैंड, दे आर द सेम साइज, उनका जो वॉल्यूम है, जो उनका साइज है वो सेम है. In the first plate I am having 10 almonds and in the second plate I am having 20 almonds. So the number of particles, here we are talking about the almond. So almond can be considered as one particle. So in which of the plates the number of particles is more? The number of particles, number of almonds is more in the second plate which is having 20 almonds. So the mass is more in the second plate, so the density of second plate will be more. अगर किसी चीज में वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है, राइट, एंड उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ज्यादा होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो उसकी चीज की डेंसिटी कम होगी. And the materials which have higher density, they are heavier in the comparison of the materials which have lesser density. लेसर डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स लाइट वेटेड होते हैं एंड हैवी डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स हैवियर होते हैं. बात करते हैं, सो वी कैन से दैट मेटल्स आर डेंसर, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. एंड व्हाई दैट इज सो? बिकॉज मेटल्स आर जनरली solid in physical state, and in solid all the particles are tightly packed. Particles बहुत tightly closely packed रहते हैं, right? So number of particles क्या हो जाएगा solids के अंदर? It is higher, and higher the number of particles, higher the mass, higher will be the density. बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, that is the melting and boiling point. Melting point is that certain point at which any metal starts melting, जिसको पिघलना शुरू हो जाता है. That particular temperature is called as melting point, and the boiling point is the temperature, fixed temperature at which any substance starts boiling, जिसको उबलना शुरू हो जाता है. That fixed temperature is called as the boiling point. These metals, they have high melting and boiling points because of their physical state. As we discussed that metals are generally tightly packed, इनमें जो particles होते हैं वो closely packed हैं. And why they all are closely packed? Because they have strong bonding. उनके बीच में जो bonding है that is very strong. तो अगर मुझे एक पीस ऑफ मेटल को अगर ब्रेक करना हो, उसको मुझे मेल्ट करना हो, राइट, लाइक आई एम हैविंग अ पीस ऑफ आयरन और पीस ऑफ गोल्ड, और मुझे उसको मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ हीट, काफी ज्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी ताकि उसके बीच की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो इजीली ब्रेक हो जाए. एंड एज सून एज द बॉन्डिंग इन दीज पार्टिकल्स विल गेट ब्रेक, दे विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट दैट इज कॉल्ड एज द मोल्टन स्टेट. So we can say that metals, they have the high melting point and high boiling point. That's all about the physical properties of metals. In our next video, we will discuss about the physical properties of non-metals. Till then, thanks for watching.